Hello everyone, welcome back. In this tutorial we are going to discuss about the while loop. So the syntax of the while loop is very simple. In this while loop only we have to provide the condition, and before checking the condition you need to initialize the variables first, and then that initial value is to be compared with the condition, and if the condition will be true then it will execute the statements and increase the value or decrease the value according to your requirement. So first of all we have to initialize one variable. Suppose x is equals to 1 and I want to display all the values from 1 to 5. Okay, so x is initialized by 1, and in the while loop according to the syntax, you are seeing the syntax that only the condition is provided. Okay, so here we are providing the condition that x should be less than equals to 5. Okay, अगर x की वैल्यू 5 या 5 से कम है तो मुझे x की वैल्यू को प्रिंट करनी है. Clear? So you display the value of x like this and then increase the value of x by 1. Clear? So this is a very simple program that will give you the idea that how the while loop can be written. x का वैल्यू 1 is less than equals to 5. तो आप ऐसे बोल सकते हैं जब तक x की वैल्यू 5 या 5 से कम है तब तक आपको x की वैल्यू को प्रिंट करनी है और x का वैल्यू 1 इंक्रीज करना है. तो पहली बार में x का वैल्यू 1 है, 1 is less than equal to 5 ट्रू है तो x का वैल्यू प्रिंट करेगा और x का वैल्यू 1 इंक्रीज कर देगा यहाँ पे तो 2 हो जाएगा. ओके, फिर ऊपर जाएगा 2 is less than equal to 5 सही है तो फिर अंदर आया 2 को प्रिंट करेगा और फिर x का वैल्यू 1 इंक्रीज किया 3, और ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. क्लियर? तो आप F7 करके आप देख सकते हैं पहली बार में x का वैल्यू इनिशियलाइज हुआ 1 and then it will check the condition that x is less than equal to 5 is true. So come inside the block and the value of x will be printed and then increase the value of x by 1. Go to the top, check the condition. So 2 is less than equals to 5 is true. So again it will be 2. Now increase the value of x. 3 is less than equal to 5 is true. So print 3. Again 4 is less than equal to 5 is true. Print 4. Now 5 is less than equal to 5 is true. Again 6, and now 6 is less than equal to 5 is false. So it will exit from this block. Okay, and gets ch. So it has printed the value 1 2 3 4 5. Clear? So इस while loop के थ्रू आप वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो हम लोगों ने for loop के थ्रू सॉल्व किया हो. क्लियर? तो आप या तो for loop का यूज़ करें या while loop का यूज़ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको जो इजी लगता है आप उसको चॉइस कर सकते हैं. क्लियर?